So students, this is the last topic of your book, which is why should we study political theory. ओके अभी तक हमने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग है. ओके पॉलिटिकल थ्योरी कंप्राइज क्या करती है. देन वी स्टडी अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे हमें हेल्प करती है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दैट हमें क्यों पढ़नी चाहिए. वाई शुड वी स्टडी, लाइक वाई शुड यू एज अ स्टूडेंट ऑफ 11th और 12th और हायर स्कूल शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. We may have political ideas, but do we need to study political theory? Is it not meant, it is not more suited for politicians who practice policies, or for bureaucrats who make policies, or for those who teach political theory, or for lawyers or judges who interpret the constitution and law, or for activists and journalists who express exploitation and demand new rights? Why do we high school students gain by what do we high school students gain by knowing the meaning of freedom or equality? Now here is a whole concept of that you as a student of 11th might question कि हम क्यों political theory पढ़ें. Rather हमें तो concepts like equality, justice, all the principles रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो हाउ विल इट हेल्प अस, हम क्यों पढ़ें. रैदर पॉलिटिशियंस को पढ़ना चाहिए बिकॉज वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो गवर्नेंस करते हैं. और जजेस, लॉयर्स बिकॉज दे इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज़ को एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, मीनिंग देते हैं. और वी कैन सी दी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो राइट्स की बात करते हैं या न्यूज़ दिखाते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड. सो दे शुड स्टडी. हमारा क्या फ़ायदा होगा इसको पढ़ने से. सो दिस बुक गिव्स यू फ्यू रीजन्स. सो द फर्स्ट रीज़न, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू शुड रीड और स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी बिकॉज first of all, political theory is relevant for all the above target groups. As high school students, we may choose one of the above profession in the future, and so indirectly it is relevant for us even now. Do we not learn mathematics all through? Not all of us will become mathematicians or engineers. Is it not because basic arithmetic is useful to life in general? Now first reason जो आपको political theory पढ़ना चाहिए, since you are a student of political science, because all the professions like we have already discussed, like journalists, activists, politicians, lawyers, okay, or judges, anyone. So you might never know that you might fall into these professions, okay. So that is why you should be prepared to learn political theory. Other than that, if even you don't want to join these professions, you are learning maths. आपको हो सकता है आपको मैथमेटिशियन नहीं पढ़ना, आपको बचपन से हम मैथ्स सिखाते हैं. But not all the students will go into the profession of engineer or will become mathematician. But आप मैथ्स क्यों पढ़ते हो? So that आपका एक जनरल अर्थमेटिक जो है उसका स्किल्स आपके अंदर जनरेट हो जाए. If you go to a shop to buy something, आप कंफ्यूज ना हो, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन पता हो. okay, small little things, you have a calculative skills. Even if you are thinking about some idea, some policy, or even if you are thinking about, for example, you want to have a house loan or you want to have a car in installment, so you can have a planning जिसमें आपको मैथ्स काम करेगी. that what is your income, how much installments will you be able to pay, not able to pay. You will think about the critical situations, if प्रॉब्लम आ गई तो, इफ़ यू लूज़ ऑन योर जॉब, सो हाउ विल यू कैलकुलेट अबाउट एवरी मैथमेटिकल स्किल्स, और यू यूज़ एवरी काइंड ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स जो कि एक जनरल अर्थमेटिक है. ओके, सो इन द सेम वे, इवन इफ यू डोंट वांट टू बी अ जज और अ पॉलिटिशियन और एनी एक्टिविस्ट, दिस विल मेक यू एन अवेयर सिटीजन्स. सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी ही, थ्योरिस्ट और यू कैन से पॉलिटिशियंस आर नॉट जस्ट इन्वॉल्व इन गवर्नेंस. इवन हाउ यू कैन बी एन अवेयर सिटीजन जब आप यू गो फॉर वोटिंग. ओके, सो हाउ मच अवेयर यू शुड बी अवेयर दैट आपकी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज ला रही है. इज़ इट गुड फॉर यू, इज़ इट नॉट गुड फॉर यू. तो वो कैसे आपको पता चलेगी जब आपके सारे नोशंस ऑफ we can say related to political theory clear है. Okay, second thing,
We are all going to be citizens entitled to vote and decide other issues, which I have already explained you. To act responsibly, it is helped to have a basic knowledge of the political idea and institution that shape the world we live in. In the information society, it is crucial that we learn to be responsible, informed. If we are to participate in Gram Sabha or offer our views on websites and polls, if we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. But if we are thoughtful and mature, we can see the new media to discuss and express our common interest. Other thing apart from that is our world is becoming a more of information world. Okay, we are so much on social media now. So many people write to our Prime Minister Modi ji while using Twitters or through Man Ki Baat, sending SMS and so many things. But if you are not aware citizens, okay, अगर आप अवेयर सिटीज़न हो ही नहीं, आप इन्फॉर्म, दैट मीन्स जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इन्फॉर्म सिटीज़न ही नहीं हो, हाउ विल यू रिएक्ट टू समथिंग? आपको समझ ही नहीं आएगी ये पॉलिसी क्यों आ रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है. आप जस्ट लाइक एनी अदर अनएजुकेटेड पर्सन जो सिर्फ अपने नज़रिए से इक्वालिटी को देखते हैं और अपने नज़रिए से फ्रीडम को देखते हैं, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, if we are talking about this whole lockdown situation, okay, so in that many people will say, no, the government has done so bad, how can people stay for 2 months in a lockdown situation, just stay at home, this is a really hard situation, log depression mein marenge and all these things. But if you are an informed citizen, if you are a rational or mature citizen, you will understand that it is not about lockdown, it is about to slow down the effect of pandemic, right? ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीन, अल्टीमेटली इफ देर आर नो वैक्सीन्स देर इज़ नो क्योर. बट व्हाट इज़ लॉकडाउन डूइंग? लॉकडाउन एक्चुअली उसके रेपरकशंस को, उसके इफ़ेक्ट्स को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, राइट? दैट मीन्स अगर इमीडिएटली आपने सारी चीज़ें खोल दी, there will be so many patients who will be affected by coronavirus, right? But do we have so many facilities? Do we have so many beds? Do we have so many doctors? So for that, the safer side was to slow down the effect of corona, right? So these things only that person will say who is informed, who is educated. All right.